किदाम्बी श्रीकान्तः द्वितीयक्रमे प्रविष्टवान् इति वार्ताः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद विभूति जी, थैंक यू गौरा। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti. And yes, Vishal, on this cold January morning here in New Delhi, a very warm welcome to this program. A quick look at the headlines. India to be a $30 trillion economy by 2047, says Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Key domestic indices end higher. Sensex closes at 71,658. Nifty settles at 21,619. And tepid sentiment seen in global markets, except Nikkei, major Asian stocks end lower. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 71,658 और निफ्टी 21,619 पर बंद हुआ। और वैश्विक बाजारों में नरमी, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद। Starting with the first story of the day, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India would be a $30 trillion economy by 2047. Speaking at the launch of Gujarat's roadmap for Viksit Bharat by 2047 at the sidelines of the vibrant Gujarat summit, the minister said the country will become a $5 trillion economy by 2028. Ms. Sitharaman said that India had received $919 billion in foreign direct investment in 23 years till now, till 2023. Of this, 65% of the investments came in the last 9 years. She also praised the contribution of Gujarat as a growth engine of the country, with more than an 8% contribution to the country's GDP. Vishal, looking at FDI figures and keeping in mind the Fed's approach to taking on inflation in the US. So how do you see this $919 billion figure moving in 2024? Well, this is a very significant figure, Gaura, and let's look at the larger perspective here. The larger perspective is that this assertion that Indian economy is doing extremely well. It has very strong fundamentals and we are on a very fast growth trajectory is something which has been pointed out by the government, by the Indian government a number of times. Also, it's not just about the Indian analysis. Independent global economic agencies also have, through the, whether it is the credit rating agencies or whether the overall analysis of the Indian economy, they've also pointed out the same things that, Indian economy for the past few years is the only economy which has grown steadily and at a very fast pace than if you make it a comparison to even our neighbors, China
or even, global economies as well. Specifically, the recovery in the post-pandemic period, that recovery itself shows the remarkable strength of the fundamentals of the Indian economy. So this figure of a $5 trillion economy by 2028 and a $30 trillion economy by 2047 is obviously, these figures should not be surprising to anyone now. We are very much on the track. The fundamentals are strong, and the kind of FDI figure, $919 billion till 2023 in 23 years. And the most important part is that more than 65% of it in the past less than decade. So that shows that our economic heft in the world is equally growing. Of course, there's a diplomatic heft as well, but economy, since we're talking about it here, it's growing very steadily and very strongly. So backed by fundamentals, strong, not just rhetoric, but solid assertions. Solid assertions. जी, पीएम मोदी ने भी कहा कि हम 25 साल के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब विश्व बैंक की बात देखिए, विश्व बैंक ये कह रहा है कि इस साल जो है अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट रहेगा वो धीमी रहेगी, लेकिन वही विश्व बैंक भारत के लिए कहता है कि इस साल जो है 6.4 का इसका जो है अनुमान है जीडीपी के ग्रोथ का। जी बिल्कुल विभूति जी, वही मैं कह रहा था कि केवल फंडामेंटल्स की बात नहीं है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किन मजबूत स्तंभों पर खड़ी है, केवल उसकी बात नहीं है। बात ये भी है कि उन स्तंभों पर जो एक अर्थव्यवस्था की जो इमारत है, उस नींव पर जो इमारत बनी हुई है, उसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कितनी कंसिस्टेंट है, और वो कंसिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रही है, लगभग हर सेक्टर में दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ कई जगह उछाल भी आएगा, कई जगह गिरावट भी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं और एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा की जब बात करते हैं, तो शायद जो दुनिया की इकोनॉमिक महाशक्तियां जो है वो पिछले कुछ सालों से हमारी तरफ देख जरूर रही हैं कि ये हिंदुस्तान में किस तरह से हो रहा है और वो इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हैं, ताकि हम, यानी कि वो जो बड़ी महाशक्तियां हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर्स जिनको कहा जाता है, या डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, वो अपनी गिरती साख को कैसे बचा पाएं। अब वो लेसन्स जिसे सीख कहा जाए वो शायद हमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और डिजिटल इकोनॉमी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Right. So that means when these figures, Vishal, are coming out, and somewhere for all of us to understand and do help us understand that, is that when foreign investment comes into the country, one is of course market volatility, which is very, very, very short term. But there is a complete understanding globally of the fact that there is a growth story happening. It's going to go over a number of years, and keeping aside volatility, they are pitching and betting on India for a larger and a longer growth story. Well, indeed, and let's take a closer look at the sectors. Where is the money coming to, or why is the money coming to India when we talk about foreign direct investment? Let's look at the sectors. India is expanding humongously when we are talking about defense manufacturing. So, won't be international defense manufacturers or investors would be interested in that. That's one part. Okay. The other is the infrastructure story. You see anywhere there is a huge development when we are talking about building roads, building railway lines, and look at last year's budget figures as well. Maximum amount of money allocated to the railway sector. So of course there is a public spending, and that public spending is attracting capital investment in terms of FDI as well. There are other sectors also. During the pandemic period, India established a baseline that yes, we can do it, and we started doing it through health sector, through our pharma sector. We showed the world that yes, we have the prowess, and manufacturing of course is one of our strong points here. We have the demographic dividend as well. We have a skilled manpower. We have so long been always considered a soft power. So it's like on every angle there is a positivity to dwell upon, and perhaps that's the reason why we have these FDI figures, why we have these investors coming in. When you're trying to connect it to the market or the Sensex as well, then perhaps there might be some dichotomy, but that's because I personally believe that Sensex and economy are not a reflection of each other. Right. So you spoke of the Sensex. Listeners, we're going to go in for a short break. When we come back, we'll talk about stock market news and our other headline stories. You stay with us.
अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। अल्प विराम के बाद आपका स्वागत। शेयर बाजार की बात करते हैं। भारी उतार चढ़ाव के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। इस सप्ताह जारी होने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़ों और कंपनियों के नतीजे को लेकर निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सेंसेक्स 271 अंक यानी 0.40% बढ़कर 71,658 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 74 अंक यानी 0.35% उछाल के साथ 21,619 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.23% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.35% की वृद्धि हुई है। और अब रुपया का हाल जानते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक आज उछाल के साथ 102.40 पर था। And now taking you through a detailed look at the stock market. Key domestic equity indices ended higher amid high volatility as investors prefer to stay at the sidelines ahead of inflation data and key earnings this week. The Sensex ended 271 points or 0.4% up at 71,658. The Nifty also jumped 74 points or 0.35% to close at 21,619. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.23% and the small-cap index rose 0.35%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 companies appreciated, while those of 16 companies declined. Reliance Industries surged 2.7%, HCL Tech gained 2.2%, and ICICI Bank rose 1.4%. On the other side, NTPC declined 2%, Power Grid fell 1.3%, and Ultratech Cement slipped 1%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors gained while 6 declined. Services sector gained 1.4%, consumer durables rose 0.7%, and consumer discretionary added 0.5%. On the other side, the oil and gas sector fell 0.5%, FMCG slipped 0.4%, and utilities index lost 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,045 companies appreciated, while those of 1,790 declined. A total of 100 companies remained unchanged. Vishal, wanting to understand from you when the market started, when it opened, and there was a major falling of major shares also, then recovery, and then ending up a little higher up. How do you see this juxtapositioned with the movement of the past 7 or 8 days? Well, Gaura, if you look at the entire sequence of events in the past 7-8 days, and if you try and juxtapose it with what has happened today in the markets, there's one very significant aspect, and that is vis-a-vis Nifty. Today, as soon as it touched around 21,500, it moved up and closed at somewhere around 21,619. So it seems that's the benchmark area as of now, 21,500. And analysts say that, perhaps the next benchmark area would be somewhere around 21,750. And that should, push the Nifty further to 20. Like a breakout. Yeah, breakout to 2,200. But there's another interesting aspect here. That aspect is that there seems to be too much to and fro movement happening in the past 5-7 days, a little bit up and down in certain sectors. If, for example, today Nifty IT indice was up, then perhaps maybe 3 days ago Nifty IT indice was not in green. So why is it happening? And with other sectors as well, there seems to be clearly a lack of direction for the market. The reason why there is a lack of direction for the market in the past few days is that perhaps the market is looking forward to some very specific cues. What kind of cues? As you mentioned earlier, the Q3 results are expected tomorrow from the IT sector and the majors like TCS and Infosys as well.
But my analysis is that it's not about the results only which the market is looking forward to. It's about what the projection or what the strategy, this sector's major player will deploy and announce tomorrow once the results are announced. That's one cue. The other cue, as you mentioned, is the data, the inflation data. The CPI data would be coming in tomorrow from the US. That becomes a very strong and a very important basis for the Federal Reserve Bank to announce its monetary policy. Everybody is looking forward to it, whether there'll be rate cuts or whether the hawkish trend will continue. Same goes for the Indian scenario as well. We'll have CPI data on Friday, and then again that gives a bit of a cue, bit of an idea that this is the direction where perhaps we are heading. So if that's the direction we are heading, then that gives the market a cue, and as someone would say, a cue becomes a really interesting aspect for the market to move further, and we might see some decisive move in various sectors in perhaps the last 2 days of this week's Sensex journey. So some advice for our retail investors to keep some cash handy, to move out, take certain positions and wait, because there is volatility, and you're saying fundamentally it's strong, and maybe in the midterm, midterm, the definitions are changing now, so maybe in 4 to 6 weeks the trend is going to be upwards. So should they take positions? Should they wait? What would you say? See, when you try and advise an investor, there are various aspects to it, and that's independent investor view in terms of how they want to play in the market, move ahead or take a position, or play wait and watch. Now, in the lack of a direction, the best policy is to wait and watch, because let the market have a direction. But one has to be a very thought out and a well-read investor, and a good investor, I believe, is that makes himself aware or herself aware about what the cues are, and perhaps be ready for the position which the market is likely to take. So herein, be very aware about what the inflation data is going to convey, be very aware about what the Q3 results are going to convey, a comparative analysis with, of course, Q1 and Q2, because these results are never seen in isolation. They're always seen as a continuation of what a particular sector's performance has been. And of course, as I was saying, the all eyes will be set more on what the future trajectory or future strategy will be by the sector leaders. Right. DPIIT यानी द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आज से स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल प्रणाली और व्यवस्था स्थापित करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप प्रणाली मजबूती से स्थापित हो रही है। 2016 में 400 स्टार्टअप उद्यमों से बढ़कर पंजीकृत स्टार्टअप उद्यमियों की संख्या 1,17,000 से अधिक हो गई है। विशाल जी, ये 1,17,000 की संख्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टअप की जहाँ तक बात है विभूति जी, तो हिंदुस्तान के जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने दुनिया में अपना नाम जमा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात हुई थी 2016 में, और अभी लगभग 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो 8 साल के एक छोटे पीरियड में एक पॉलिसी बेस्ड इकोसिस्टम क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी अचीवमेंट ये है कि उस इकोसिस्टम का बेनिफिट कितने एंटरप्रेन्योर्स ने लिया और किस तरह से वो आगे बढ़े, क्योंकि केवल ये 1,17,000 की बात नहीं है। आप देखिए कि इसमें से कितने यूनिकॉर्न्स बने और किस गति से बने।
तो वो किस स्पीड से बने, और इंक्यूबेटर जिसकी बात कही जा सकती है, अलग अलग इंक्यूबेटर्स हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, तो वो दर्शाता है कि जहाँ तक स्टार्टअप इकोनॉमी की बात है और जहाँ तक स्टार्टअप पॉलिसीज से बेनिफिट लेने की बात है, तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैव announced their arrival on the global stage. Right, with trumpets blaring. Yes. समय एक अल्प विराम का है, जल्द वापस लौटते हैं। जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। जी, एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। जापान के निक्केई को छोड़कर प्रमुख एशियाई बाजार आज नुकसान के साथ बंद हुए। निक्केई में 2% की तेजी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स और हांगकांग के हैंग सेंग दोनों सूचकांकों में 0.6% की गिरावट आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% टूट गया। अंतिम समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में यूरोपियन शेयर बाजार मिलाजुला कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 0.3% की गिरावट आई। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक दोनों स्थिर कारोबार कर रहे थे। विशाल जी, आखिर आज क्या हुआ कि निक्केई को छोड़कर बाकी तमाम जो है वहाँ गिरावट ही देखने को मिली? देखिए विभूति जी, जो इंटरनेशनल मार्केट है, ख़ासतौर पे एशियन और यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें और अमेरिका के भी मार्केट्स की तरफ नज़र डालें, तो सीधे तौर पे सबकी नज़र वो फेडरल रिजर्व बैंक का जो पोटेंशियल रेट कट है उसकी तरफ है। इन सब मार्केट्स के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्यू है। क्या किस तरह की फिगर्स आएंगी इन्फ्लेशन की, महंगाई दर की जो है, और वहाँ पर जो फेडरल रिजर्व बैंक किस तरह का बेस एक बनाता है। जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, क्या रिजर्व बैंक अपना जो फेडरल रिजर्व बैंक है, क्या वो हॉकी स्टैंड जारी रखेगा या फिर रेट कट्स की घोषणा हो सकती है, क्योंकि उससे ये जो ग्लोबल मार्केट्स हैं और ख़ासतौर पे यूरोपियन मार्केट की बात है तो उन पे बहुत असर पड़ेगा। और अगर बाकी मार्केट्स की तरफ देखें तो चाहे वो निक्केई की बात हो या फिर हांगकांग की बात हो या फिर चाइना की बात हो, उसका सीधा असर वहाँ भी देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी जो मार्केट है, इंडियन मार्केट्स की जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसका एक जिसे कहा जाए कि थोड़ा सा असर देखने को मिला, जिस तरह से पुल डाउन हुआ बीच बीच में जो है। लेकिन जो नेशनल क्यूज़ हैं, जो नेशनल इकोनॉमिक क्यूज़ हैं, उससे वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ इन सब मार्केट्स की तरफ अगर देखें तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो जब जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, शायद फेडरल रिजर्व बैंक की जो खबर आएगी और सीपीआई का जो डेटा आएगा यूएस का, तो उसके बाद थोड़ी सी तस्वीर और साफ हो पाए। कल और परसों शायद हमें दूसरी तस्वीर देखने को मिले। जी हाँ। Right. Taking a look at the US markets, the S&P 500 and Dow both declined yesterday after a slight uptick in treasury yields. Investors are closely monitoring potential Federal Reserve interest rate cuts in 2024, just like you mentioned, Vishal. The Dow Jones Industrial Average fell 0.4% and the S&P 500 lost 0.2%. The Nasdaq Composite Index added 0.1%. So wanting to understand from you again, Vishal, you see every time earlier when the Fed was supposed to make their statement, the markets across, particularly in India, used to react very sharply. Now the reaction is very moderated and marginal. Could, and this is just a postulation and do correct me, that somewhere the FDI is also seeing, those investors are seeing that even if the rates change in favor of an outflow from India, the returns in the Indian market are still heavy enough to probably compensate for it. Indeed, and that's the entire game plan when it comes to investors and when it comes to FDI. Why would somebody invest in an economy if they believe that it's going to be very short term, or if they believe if they have even a slightest doubt that a scenario might change? A continuation of policies, political stability, of course, all this
adds to the economic outlook of a country and the strong fundamentals of an economy. So when we say that they are somehow neutralized, these cues which come from global indices or cues which come from Federal Reserve Bank or maybe other federal banks from other developed economies, they seem to have a lesser of an impact now, because one of the investors' confidence, and investors by I mean international investors, Right. the FDI confidence, but also the homegrown investors' confidence as well, the Indian investors' confidence as well. It means a lot, and their confidence seems to be more towards the kind of policies which are adopted by the government and the kind of stance which is taken by Reserve Bank of India. So this is a mixed plate, Right. and that's why I said in the past few days we've seen market without a direction. Perhaps in another day or two there'll be a set direction for the midterm at least. So Atmanirbharta in various ways, exhibiting itself, right? As you said, our domestic retail investors really Indeed. playing a huge part. Look at the crude oil prices. Oil prices remain steady today, giving up most of its earlier gains. Concerns about supply disruptions in West Asia due to the Israel-Hamas conflict and the closure of a major Libyan oil field countered the impact of growing US production and concerns over sluggish economic expansion. In intraday trade, Brent crude was trading at 0.01% higher at $77.66 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading at 0.1%, which is that much higher at $72.37 per barrel when reports last came in. We'll take a quick look at the next story. The International Labour Organization, ILO, said today that global unemployment rate is expected to inch up to 5.2% this year, primarily because of a rise in joblessness in advanced economies. ILO's 2024 World Employment and Social Outlook report forecasts the number of unemployed people will rise by 2 million, lifting the global unemployment rate to 5.2% from 5.1% in 2023. Vishal, how does this pan out for economies across and, of course, also for the Indian stock market? Well, these are very interesting numbers, the unemployment numbers for the advanced economies specifically. And we've seen how the advanced economies have struggled for recovery in the post-COVID period. Things were, of course, not very rosy for them in the pre-COVID period as well. But the entire pandemic scenario seems to have hit their economies really hard because they seems to be in a transitional phase right now. Their respective strong fundamentals. For example, if for an economy like United States or for South Korea or for Japan, if it was manufacturing, being a strong fundamental for their economy, one of the sectors, then things seems to be moving towards Asia now more rapidly. Of course, China was one of the contenders, but now in the past few years, India is much stronger contender there. Then there are other economies, other countries, other developing economies in Asia, Vietnam, Philippines, which are there taking a share of that pie. So that's one aspect. And two, look at the other numbers quickly. If you look at the other numbers, one other data suggests that in Philippines, for Philippines, one of the countries which I was talking about, the unemployment rate seems to be going down, and it has reached lowest level in a decade. So that explains a lot of things. Right. We would love to have a longer conversation, but running out of time, as they say in radio, we're controlled by the clock. So thank you so much for joining us on the program. And listeners, a quick look at the headlines. India to be a $30 trillion economy by 2047, says Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Key domestic indices end higher. Sensex closes at 71,658. Nifty settles at 21,619. And tepid sentiment seen in global markets except for the Nikkei. Major Asian stocks end lower. And that's it in this program. Namaskar. नमस्कार. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. Prime Minister Narendra Modi has said that India is progressing as Vishwamitra in the changing world order and the world is looking at India as an important pillar of stability.